Hi everyone. Today we are going to start chapter number 7 of class 10th standard, coordinate geometry. In this section or in this chapter we have already studied about location of the points on the x-axis and y-axis, and locate the point also in the plane surface like x and y. So what is the meaning of coordinates? What is the basic meaning of coordinates? The basic meaning of coordinates is combination of abscissa and ordinate is called coordinate. Combination of x-axis and y-axis is called coordinate axis. Okay, simply on the x-axis and y-axis, wait, after few minutes draw the diagram. But before the diagram, the basic concept is very clear from class 9th standard already, but revise some topics for your memory, like the distance of a point from the y-axis is called its x-coordinate. You confirm it. The distance of a point from the y-axis से कोई point का जो distance होगा, it is called x-coordinate. Just opposite meaning बोला जाता है. अगर y-axis लेते हैं, x के coordinates को face करेंगे, x-axis लेंगे तो y के coordinate को face करेंगे, y-axis लेंगे तो x coordinate को face करके हम abscissa बोलेंगे, x axis को जब लेंगे तो y coordinate को face करेंगे और ordinate बोलेंगे, because abscissa is x belonging to x axis, and ordinate is belonging to y axis element. ठीक है. सो एक तरह से क्या होगा कि अगर y एक्सेस से किसी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर आप लेंगे तो वो आपका x कोऑर्डिनेट पे चला जाएगा, जिसको आप मीनिंग कहेंगे एब्सिका, जो x एक्सेस से बिलोंग करेगा. और सेम द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द x एक्सेस इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट लाइक ऑर्डिनेट. ओके, एंड नाउ in this chapter, basically in this chapter, if there are two coordinates x1 y1 and x2 y2, then find the distance between of two points and two coordinates like x dash y dash, simply intersecting x axis and y axis called origin, capital O, and coordinates always 0, 0. From O to x axis always positive direction, and from O to x dash calculating all be negative direction. Similarly, this is the perpendicular axis, positive direction and negative direction. Okay, so according to x axis, y axis, there are four segments. First, second, third, fourth. This is the first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. ठीक. Rotation of the sign of the coordinates. Rotation of the sign of the coordinate in the first quadrant. This is the positive. This is the positive. X axis positive, y axis positive. So plus comma plus belonging to first quadrant, and second quadrant x axis belonging to negative and y axis belonging to positive. So minus comma plus, because first is abscissa and second is ordinate. First is x and y. Okay. In the third coordinate belonging to x, minus, and y also minus. In the fourth quadrant positive, minus. Similarly, okay. So after the sign notation,
after the sign notation children, if there are two coordinates, suppose कि अगर लोकेशन इससे पहले क्या था क्लास 9 में आपके पास कोऑर्डिनेट्स थे, आप उसको लोकेट कर देते थे, जिस कोऑर्डिनेट में वो पॉइंट दिख जाता था आप उसको लोकेट कर, सपोज कि आपके पास -1,3 था, तो -1,3 किस कोऑर्डिनेट से बिलोंग कर रहा है, माइनस प्लस, तो माइनस प्लस आप इसको सेकेंड कोऑर्डिनेट से बिलोंग कर देते थे, और उसके बाद आप यहाँ पर अपने डिजिट्स को या एक्सेस को 1 2 3 के ऑर्डर में सेटअप कर देते थे। तो आप यहाँ से पॉइंट निकाल देते थे कि x एक्सेस -1 एंड y एक्सेस 3। सो हियर ये पॉसिबिलिटी बनती थी कि ये पॉइंट्स यहाँ पर जनरेट होगा। अब क्या हो गया फाइनली, इन द क्लास 10th स्टैंडर्ड एंड इन दिस चैप्टर ओके, फाइनली इन दिस चैप्टर वी विल लर्न about distance between of two coordinates. Okay, so suppose in the first quadrant any point 7,3, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 7,3 क्यों है, बिकॉज आपका x एक्सेस y एक्सेस पॉजिटिव बिलोंग कर रहा है, किसी भी डिजिट के आगे प्लस अंडरस्टूड होता है, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिचुएटेड हो गया। एंड सपोज कि सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट में कोई आप वैल्यू ले लेते हैं -3,5, तो माइनस प्लस के कॉम्बिनेशंस में आप सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, क्योंकि x एक्सेस आपका नेगेटिव हो गया, y एक्सेस आपका पॉजिटिव हो गया। अलॉटमेंट कर दिए, दिस इज द कोऑर्डिनेट्स, दिस इज द 7,3 -3,5, दिस इज कोऑर्डिनेट एंड अलॉटेड द कोऑर्डिनेट्स पॉइंट नेम लाइक A एंड B। दो कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब दो कोऑर्डिनेट्स इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ टू पॉइंट्स। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ टू पॉइंट्स की मीनिंग क्या हो जाएगी, ये दो पॉइंट्स के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना होगा। डिस्टेंस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प होती है, बट डायरेक्टली आप यहाँ पर सिर्फ ये सॉल्व कर सकते हैं। एंड नो रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रूविंग ऑफ दिस पोर्शन, so directly this is distance formula. First of all, naming distance formula. If two coordinates are given like that is P x1 comma y1 and Q x2 comma y2, then distance between two points, the distance between two points are like, किसी भी कोऑर्डिनेट्स किसी पॉइंट के ऊपर डिस्टेंस निकालेंगे उसकी नेमिंग कर सकते हैं पी क्यू, एंड कैपिटल डी या स्मॉल डी से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी फॉर डिस्टेंस, एंड टेकिंग द अंडर रूट डिफरेंस ऑफ एप्सिका एंड डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम जब दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना होता है तो हम डिफरेंस ऑफ एप्सिका लेते हैं एंड डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट लेते हैं, लाइक x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ओके, फॉर एक्सरसाइज 7.1 mainly questions are points are given in the triangle shape, in the square shape, in the quadrilateral shapes। कोई भी शेप आ सकते हैं, उस फिगर में उसके वर्टिसेस पे उसके कोऑर्डिनेट्स उसके पॉइंट्स अलॉट होंगे और उनके बीच का डिस्टेंस एज वेल एज एरिया। जब डिस्टेंस की मीनिंग आ जाएगी तो एज वेल एज एरिया भी फाइंड करने को आ सकता है। ओके, सो
one thing more, children. What if two coordinates are given x1 comma y1 and x2 comma y2, then distance between of two points, difference of epsica and difference of ordinate like x1 minus x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 minus y2 का होल स्क्वायर. किसी रेफरेंस बुक या एनसीईआरटी में फॉर्मूला इस फॉर्म में भी लिखा होगा. डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर ऑल द अंडर रूट एंड मोस्टली कहीं फॉर्मूला आपको ऐसे मिलेगा x1 minus x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 minus y2 होल स्क्वायर ऑल द अंडर रूट. ठीक, बोथ आर सेम बिकॉज जो डिफरेंसेस हो रहा है वो पॉजिटिव या निगेटिव में आएगा. सपोज कि इसमें +5 आ सकता है, इसमें -5 आ सकता है, तो +5 का स्क्वायर भी 25 जनरेट होगा, -5 का स्क्वायर भी 25 जनरेट होगा. ये स्क्वायरिंग की वजह से इस फॉर्मूले को आप इस फ्रेम में लिख सकते हैं. ठीक है, तो आपका ये हुआ. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट exercise 7.1. depend on only distance formula. Distance formula. Like yeah. First question, find the distance between the following pairs of points. Pair of point. 7.1. Question number 1. Find the distance between of the following pairs. First का first 2, 3 and 4, 1. Understood? So this is the x1 y1 x2 y2. 2 is x1 y1 x2 y2. The distance between of given 2 points is, we know that distance is equal to x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square all the under root. Everything visible now, student? So x1 is 2 minus x2 is 4 whole square plus y1 is 3 minus y2 is 1 whole square and all the under root. 2 minus 4 means minus 2 square is plus 4 and 3 minus 1 is 2 square is 4 plus 4 under root 8. So in under root 2 into 2 into 2. After this pair of 2 outside and under root 2. This is the distance of 2 points. So always the mention of unit. Like कि कोई पॉइंट्स होंगे उनके बीच का आप डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ज्योमेट्री के बिहाफ पे जो आंसर आएगा वो एक डिस्टेंस से बिलोंग करेगा. वो डिस्टेंस क्या होगा? mm होगा, सेंटीमीटर होगा, किलोमीटर होगा. बट इस क्वेश्चन में अपने तरफ से कोई मेजरमेंट या डायमेंशन मेंशन नहीं है. फाइनली आप लास्ट में क्या लिखेंगे अपने तरफ से? यूनिट, एनी यूनिट. वो अंडरस्टूड है, बट आपने अपना आंसर फुलफिल किया कि डिस्टेंस बिटवीन ऑफ टू कोऑर्डिनेट इज 2 under root 2 unit. Okay. And question number 2, so very simple. And question number 3 also, this is the alphabetically question. कोऑर्डिनेट्स की जगह आपके पास यहाँ पर ए बी मेंशन कर दिया है. फाइनली क्लास 9 का हमने ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन पढ़ा है. ट्रिग्नोमेट्री में कुछ क्वेश्चन रेफरेंस में ऐसे भी मिलेंगे कि डिस्टेंस के लिए या वर्टिसेस के लिए वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आ रहा होगा, साइन कॉस के फॉर्म में आ रहा होगा. ओके. क्वेश्चन नंबर 3rd part of first, like A B in the first quadrant,
minus a comma minus b. Again here mention the main axis x1, y1, x2, y2. Again apply the formula. Distance is equal to x1 minus x2 whole square, y1 minus y2 whole square, all the under root. Here x1 a minus x2 minus already है तो माइनस माइनस प्लस a होल स्क्वायर प्लस y1 b माइनस ऑलरेडी माइनस है माइनस माइनस प्लस b होल स्क्वायर, a प्लस a 2a होल स्क्वायर, b प्लस b 2b होल स्क्वायर, all the under root. Square of 2a is 4a square and square of 2b is 4b square. There are two terms, so in the under root taking the 4 common, 4, and in the bracket a square plus b square mention and taking all the under root. So here under root 4 is converted to 2, but in the under root a square plus b square unit. This is the answer of third question. Similarly, children, use this formula and solve all the questions from question number 2 up to question number 10 very simply, and between these some question like equivalence, collinear point. So in the next class, what is the meaning of collinear and trisections and what is the ratio form, then find the distance between all two forms in the terms of ratio segment. सपोज कि कोई लाइन है, उस लाइन के आपके पास पॉइंट कोऑर्डिनेट्स गिवन है, उसको ब्रेक करना है 5:7 के फॉर्म में. ओके, वो नेक्स्ट टाइम में डिस्कस होगा, बट तब तक 7.1 के सारे क्वेश्चन आप घर पे सक्सेसफुली अटेम्प्ट करिए. आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट कुछ क्वेश्चन अगर ऐसे हैं जो टेक्निकल क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे. ओके चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच.